Hello everybody, welcome to LRDI Challenger series. In this series, I'm going to put you up with one of the most deadliest rivals for any CAT aspirant, that is LRDI sets. These sets have the potential to be asked in CAT. These sets that we are going to do are from different concepts, and they're going to test you in different areas. At the same time, like I said, they have high potential of being asked in CAT. So this is round 1 of the Challenger series. We will complete multiple rounds, and then whoever completes all of these challenges will be crowned LRDI ka champion, right? So my name is Amit Surana. For people who are wondering, I am your LRDI expert, and in this round we are going to put up a very interesting set. But before we begin, let's figure out what are we going to do in general and what is Challenger series all about. So agenda for the day is quite simple. We are going to solve the Challenger series set 1, but I have something for you before you begin. If you are somebody who has already completed the Challenger series set 1, then you can go ahead. Otherwise, scroll down to the description. You will find the question set ka link. Click on that link. First, try the set, complete the challenge. If you are able to complete the challenge, come back here, continue with the video. If you are not able to complete the challenge, still okay, but I want you to give a try, right? Do not worry about the outcome, do not worry about the result. I want you to be a participant in this Challenger series. Yes? So chalo, without further ado, let's have a look at our first set, our first opponent in your round 1. The first set is called parking lot. This set is very simple, however a little complex in the way you're going to do, right? It all depends upon your first approach. This set will have a bit of arrangement and a bit of math as well. Yeah, so all in all, this is a distribution question, but it does not involve a lot of distribution, and instead it involves some arrangement as well as a little bit of math. Yeah, let's get on. Here is the set again. For people who have not tried at the challenge, please go ahead and try the challenge and then do, tabhi iska full maza aayega. Okay, so here is the set. I'm not going to spend time in looking at the set, so we're going to start solving it. There are 4 questions to it. Sabse pehle make this a habit. The moment you look at the set, please have a look at the questions as well. So we see there are 4 questions. Question 1, 2 and 4 are MCQ. Question 3 looks like an MCQ but is actually a theta question. Okay, what is this whole set about? We have to make the arrangement and then answer the question. Why? Because they're asking what is the minimum number of cars in the parking lot, for which we'll need to know which car stands where. Question 2 is asking about maximum number of cars parked between 2 of the cars. Again, for this we'll need the arrangement. Question number 3, somewhat similar. They're asking for the slot number that's there. And question number 4 again is asking for the last car in the arrangement. So ultimately we'll have to make the arrangement and then answer these 4 questions. Let's get this thing started. Let's quickly have a look at the question. A car parking lot has multiple slots in a straight line. Thank God. One evening, each of the 7 friends brought their cars. We have P, Q, R, S, T, U and V. Very convenient. And parked in the parking lot. Okay, all the cars are parked in a straight line, which again is a repetition of this, just to reiterate the fact that they are in a straight line and not parked parallelly or so. Okay, the following table gives the number of slots between any 2 cars. Between any 2 cars के बीच के कितने slots हैं? बीच के slots, not from there. So they're saying, for example, there are 10 slots between P and Q. Let's have a look at this. Do we see here? Where is P? P is here. We have Q here. So they're saying there are 10 cars between P and Q. What does it mean? It basically means that if P is here, if this is P and this is Q, that does not mean that if this is at slot 1, 10 cars from here, this will be slot 11. No. What are they saying? There are 10 cars in between. Yes, 10 cars in between. So after slot 1, you will have 2 से लेके 10 काउंट करो. So you have 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, right?
So till 11th car we will have here in this gap. So Q will not be your 11th car, it will be your 12th car. I hope you're getting the idea behind this. Okay. Another thing that you have to keep in mind here is when they say between two cars there are 10 cars, it need not always mean in one direction. So it could be in the other direction also. What could that mean? That if P is here, then we could have 10 cars here and Q could be here as well at a slot that is -12. So the idea is we don't know if P is in slot 1, right? That's the idea. We don't know which car does the parking slot start with, right? And yeah, so this being said, let's have a look at the last part. Each slot may or may not be occupied by a car. Again, have to be very careful because ultimately there are 7 cars they are saying, but then we have a situation in the first part itself we see that there are 10 cars in between. So these 10 cars or these 10 slots may not be filled by a car, they may not be occupied, right? They may be empty as well. That's very important. And obviously they're saying, however, some data in the table is missing, represented by a question mark, which we very well see here. Yeah, we see a lot of question marks. And to understand the table, I hope by now you figured out what the table is. Yeah, it's a 7x7 matrix or a grid where they're talking about how many cars are in between two cars. So when I say Punto and Qualis, which is 10, is the same as Punto and Qualis, which is 10. So it's just a repetition. Yes, they could have given the set in a more decent way, just giving it in text or in a table between P and Q, 10 cars, 10 slots. No, they made it into a table. We've made it into a table to make it a little more complex. Okay, but overall I think we get the idea. We see some zeros. What does it mean? Between Punto and Punto there are 0 cars. Obviously makes sense because Punto and Punto are the same car. Yeah. Another thing we notice is we do not see any other zeros apart from these 0, 0, 0, 0, 0, 0. We don't see any other zeros here. It could mean that there may not be 2 cars next to each other, but we can't, guess that because we see some question marks as well. That being said, let's get on. So how are we going to make the arrangement? Like I said, 10 cars could be on the left or could be on the right. So we need one car to start with, fix it as a reference point or an origin, right? Which car do we start with? Obviously we start with the car that has more data. So if you look at Punto, we have 1, 2, 3, 4 pieces of data for Punto. For Qualis we have 3. For Ritz we have 2. For Slavia we have 1, 2, 3 and 4. So Slavia also could be something that we could start with, 4 and 4. Look at Tiago, 3. Eurus has 1, 2, 2. Vento has 1, 2, right? So I think between Punto and Slavia you can start. We're going to start with Punto. No specific reason behind it. Just we wanted something that has more data so that we could run with it, right? So we're going to start with P. Now, what's the first data we have? P and Q, 10 cars, right? So like I said, it has to go in both directions. So I'm going to put P instead of 1 because 1 is where we start. But since we have to go the other side also, we're not going to put 1. We're going to start with a 0 because we have to go left as well, right as well, right? So it becomes easy for us. We could start with 100, but this is more convenient. Okay. So between P and Q, there are 10 cars. That means if P is at 0, after 10 slots, Q will be at 11. Very convenient for us. Yeah. Same way on the other direction, we'll have 10 slots and then Q could be at -11 also. See how convenient this is? +11, -11 makes it easy, right? So we're going to, instead of doing it randomly like this, we're going to put it in a table form, which makes it easy for us to go for the rest of the data as well. So here is how the table would look like. Like I said, since we have to go in both directions, yeah, we're going to put the other side of it as well. Make sense? So let's start with placing P first. With this position, we're going to, start with origin has to be there, otherwise it becomes haywire. Yeah. So हमने P पे 0 पे P लगा दिया. Now we start with the rest. So we're going to look at Qualis. Q has 10 cars between Punto and Qualis. So Qualis here or Qualis could come here as well. Yeah. So there are going to be a lot of, conditions when you have a look at this. So you have to be very careful to consider all of them. This we've kind of covered. Now,
Once we are done with Punto and Qualis, we need some, guarantee or some consideration in sense of where we are going to place. Is it going to be that side or this side? Because then from then, if for example, if I go between Qualis and Slavia, okay, we see there are 19 cars. So what would it mean? We'd have to go 19 in this direction, 19 in this direction. That's 2 cases. 19 in this direction, 19 in this direction. That's 4 cases, right? Too many cases would end up creating a lot of chaos, a lot of ruckus. So we're going to slow it down a bit. Instead of having a look at this 19 first, since we have Qualis and Slavia's location here. Let's see, Punto and Slavia, do we have? Yes, we do. So we're going to place Slavia next to Punto with 8 cars in between. So this is Punto. 8 cars here would mean Slavia is here. 8 cars here would mean Slavia is here. Okay, do you see 8 cars ka difference hai, gap hai, 1 2 3 4 5 6 7 8, and then Slavia. Same thing here, we have 8 slots empty, and then the next one is Slavia. Okay, now what are we going to check this with this 19? So what are they saying? They're saying कि Qualis and Slavia के बीच में 19 cars है. Qualis and Slavia के बीच में यहाँ पे, do you see 19 cars? Obviously not, there's only 1 car in between. Same way, Qualis and Slavia के बीच में यहाँ पे एक ही car है. So what does it mean? It means that they are going to be on the extremes. Qualis here, Slavia here, or Slavia here, Qualis here. Now again, we end up seeing what? 2 cases, right? So to make it more understandable and not, put 1 or 2 or any of that confusion, we are going to put up something right next to it, है ना? इसके नीचे हम एक और case लगा देंगे. So what are we going to place here? Any one of the cases. Yes, so I'm going to say if I'm going to remove this S, I'll put the Slavia here to the left of Punto, and I'm going to put the Qualis here to the right of Punto. So what do we remove? We can remove this S. Oh my bad. We could remove this Qualis because Qualis हमने यहाँ पे place कर दिया, and we could remove this Slavia here. Yeah, Punto stays at 0. Makes it easy for us. So now see, do you see a 19 car gap difference? 19 car बीच में, 19 slots बीच में Qualis and Slavia. Quickly check. We have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. That happens in both of these cases. So how do you check the number of cars in between? Since we have a 0 also, it becomes very convenient. Just look at 9 and 11. 9 and 11. So 9 minus of minus 11. You go for the difference, right? 9 minus of minus 11 is 20. And since you have the 0 and you have to remove this, we have a 19 car gap. I hope you're getting this. Yes. One of this you have to remove. So you have 19 car gap here also and 19 car gap in the bottom also. 11 and minus 9. Same thing. 11 minus of minus 9 is 20. If you remove 1, because you're considering either 9 or minus 11. So you remove 1, you have 19 car gap in between. Make sense? Chalo, beautiful. So this part is also done. We've successfully placed Slavia as well. If you want to make it a little more clear for you, what you can do is tick off everything in both column wise and row wise also. Jaise Punto and Qualis 10, Punto and Qualis 10, done. Punto and Slavia 8, Punto and Slavia 8, done. Slavia and Qualis 19, Qualis and Slavia 19, done. Okay, makes it easy for us to know whether we are done with that particular car or not, or that particular data or not. Now next, I think we can place Tiago as well, because with Slavia we also have Tiago's placement. Okay, with Slavia we do not have Ritz placement. That's why we've skipped Ritz now. Ritz we are not going to do now. Let's deal with Tiago. So what do we see? Punto and Tiago, there's a 6 car gap. Punto we see here. Tiago will have a 6 car gap. So we leave 6 and then we place the Tiago. Same way here. We leave 6 and then Tiago. Both places here and here we place, and then we confirm which place the Tiago would definitely be based on which location. Slavia and Tiago wala, which is 15. So let's have a look at this 15 ka gap kahan pe aa raha hai. We see if Tiago and Slavia are on the same side, again there's only a 1 car gap. So this cannot happen. That means what? That Tiago has to be again on the opposite side of Slavia. So if Tiago is here at 7,
and this is at -9, 7 minus of -9 is 16. You remove 1, you have 15 car gap. Make sense? Same way here, we can't have Slavia and Tiago on the same side. So with the two cases that we started, we are again further removing the ones that don't make sense to us. Okay, so 15 is done. 15 is done successfully. All right, so this 15, Slavia and Tiago, done. Okay, what else do we have? So with Punto, I think we have Ritz left. We're going to wait for Ritz. With Qualis, we have Urus. We're going to wait with that. With Slavia, what else do we have? We have a Vento. With Tiago, we have a Punto. This is also done. Tiago and Punto 6. Tiago and Punto 6 is done. We have Urus. We can either start with Urus or we can start with a Vento. Anything that makes sense for us. Okay. So I'm going to start with Vento. Yeah. You can also start with Urus. Urus also has 2 pieces of data. Vento also has 2 pieces of data. So anything that would make sense to you, you can start with. Yeah. It's better if we have Slavia in mind, because again, we have something to compare it with, right? So let's keep Slavia and let's start with Vento. So where do you see Vento, guys? Vento with respect to Ritz, Vento with respect to Slavia is 6. We're going to start with this. Okay. We're going to deal with this quickly. Yeah, we're going to deal with this. All right. So what do we see? We see Slavia and Vento at a 6. Let's start with that. Okay. So Slavia and Vento at a 6. The problem again is what? We'll have to put it on both the sides. Okay. Keep that in mind. So with 9, I need a 6 car gap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 left. Here we will have the Vento. Same way on the other side. So from here, 6 car gap, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, 6 car gap, right? Slavia and Vento. Yeah. Okay. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 left. 3 and 3, 6 left. And we have the Vento placed here. On the other side, here we have Slavia. So जो भी यहाँ पे हुआ 2 and 16, यहाँ पे -2 and 16 पे आ जाएगा. So Vento पे -2 and -16 पे Vento. Okay. Same thing because 6 car gap, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do we have Qualis and Vento? No, we have Ritz and Vento. I think we should have stopped with Vento. Shouldn't have taken up Vento. We should have taken up Urus. But anyway, with Vento, what do we have? Ritz ka position. With Vento, we have Ritz ka position, which is 2, right? So Vento se 2 left and right we have to do. Keeping in mind कि Ritz और Punto का 12 का gap है. Okay. Ritz and Punto का 12 का gap है. So I think first place Ritz and then compare it with Vento. So Punto यहाँ पे है. Ritz का 12 का gap, that means +13 पे हो सकता है Ritz. Here also we'll place it, and -13 पे भी हो सकता है Ritz. We'll place it here also, and then check कौन सा हम eliminate कर सकते हैं, because we know Ritz and Vento का 2 का gap है. Ritz and Vento का 2 का gap है. तो यहाँ पे देखो Ritz and Vento 1, 2 का gap. This makes sense. Yes, but look at the bottom one. Ritz and Vento 2 का gap नहीं है, काफी high है. We're going to let this one go, right? Ritz यहाँ पे नहीं आ सकता. Ultimately Vento यहाँ पे नहीं आ सकता. In this particular situation. Okay. Same way यहाँ पे देखो Ritz and Vento का 2 का gap है. That makes sense to us. Yes. यहाँ पे Ritz and Vento का we have a huge gap. So Ritz and Vento cannot come here as well. Now quickly see if it makes sense. Ritz and Vento 2 gap. Ritz and Vento 2 gap. Ritz and Punto 12 का gap. Ritz and Punto 12 का gap. Yes, makes sense है ना? तो ऐसे करके we are going to let go of the situations, let go of the conditions that don't make sense to us. तो हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया. Vento with Ritz, Vento with Slavia. Same way यहाँ पे भी कर लो. Vento with Ritz, Vento with Ritz, and Vento with Slavia. ये भी हो गया हमारा. Do you see Vento and Slavia के बीच में 6 का gap? Of course, yes. And we are also done with placing Ritz as well. तो अब the only car left for us to place, we have P, Q, R, S, T and V. अब सिर्फ U को place करना है. Now it becomes a little easy for us to deal with it, है ना? U को देखो. U क्या है? Qualis के साथ 3 का gap. So Qualis यहाँ पर है. Qualis यहाँ पर है.
1 2 3 का गैप टियागो है, सो इट कांट बी दिस वे, इट हैज टू बी दिस वे, 1 2 3 का गैप, एंड वी हैव यूरस हियर. सेम वे इफ वी लुक एट द अदर साइड, क्वालिस के साथ हाउ मेनी 3 का गैप है ना. कहां गया वो, यूरस एंड क्वालिस 3 का गैप है. सो क्वालिस यहां पे 1 2 3 इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, 1 2 3 इस डायरेक्शन में है यूरस. मेक सेंस. तो यूरस की पोजीशन क्या है, 15 और -15. डन. सो यूरस के केस में और क्या है कंफर्म करने के लिए, वी हैव टियागो एंड यूरस विद अ गैप ऑफ 7. लेट्स सी इफ दैट वर्क्स. टियागो एंड यूरस विद अ गैप ऑफ 7. टियागो यहां पे, यूरस यहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 का गैप, परफेक्ट. लुक एट द अदर केस, टियागो एंड यूरस, 1 2 3 4 5 6 7 का गैप, वर्क्स perfectly well. Is there anything else that we've missed? जी नहीं. We've covered everything. Punto, everything done. Qualis, everything done. Qualis and Eurus हमने प्लेस कर दिया था 3 का गैप. Ritz and Punto 12 का गैप हो गया था. Slavia and everything done. Tiago and Urus 7 का गैप हमने कर लिया था. Eurus and everything done. Vento and everything done. Right? With this we are ending up with 2 cases. अपने पास हाथ में 2 cases हैं. We have case 1. Okay, I'm going to write it here. Case 1 and case 2. ठीक है, अपने पास अब 2 cases हैं, case 1, case 2. This is what we have to deal with. Done है? Yeah. So in both these cases, if we want, we can end up filling up this gap. Okay, जो भी question marks हैं उन्हें हम बैठ के fill कर सकते हैं. But there are too many of them and there's no point in getting the value for all of these question marks. बिकॉज जो भी क्वेश्चन में पूछा उन्हीं पे हम देखते हैं, उसी के हिसाब से हम करेंगे. सो एट द एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस आई थिंक आवर बेस शुड बी दिस टेबल दैट वी हैव क्रिएटेड एंड नॉट दिस, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है. वी हैव एवरीथिंग हियर, मेक्स इट इजी फॉर अस टू डील विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. बढ़िया. क्विकली हैव अ लुक एट दिस, फिगर आउट इफ समथिंग इज मिसिंग इन योर केस. क्या आपने सिर्फ एक ही केस बनाया, क्या आपने 4-5 केस बन रहे हैं, 2 से ज्यादा केस बन रहे हैं, तो फिगर आउट एंड चेक इफ समथिंग इज मिसिंग. ठीक है, बढ़िया. अब जो बे बन गई है उसे हम स्टार्ट करेंगे यूज करना. हियर वी हैव द फाइनल वे. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन बोथ दीज केसेस. इफ यू सी, इट्स बेसिकली जस्ट अ मिरर इमेज कीपिंग पी एट द होराइजन, है ना. पी को हम ऑरिजिन पे रख के राइट साइड में अगर आप देखोगे तो एस आर वी, यहां पे पी के लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे एस आर वी इन द सेम पोजिशंस. सो जो भी पॉजिटिव में है वही नेगेटिव में है. टियागो इज +7, टियागो इज -7. डू यू सी? क्यू, क्वालिस इज एट 11, +11, -11. Urus is at 15, Urus here is at -15. So I think, you know, we all that we are seeing is the same arrangement in the opposite direction, but we need the position as well, है ना. सिर्फ arrangement काम नहीं आएगा, position भी चाहिए. So this is what we end up with. We don't need this anymore. Thank you so much for the service बोल के आगे बढ़ते हैं, इसे use करते हैं to answer the questions. Now answering the question should be a piece of cake, but you have to be very careful about the traps that they lay. Okay, so I'm going to use this here. Look at the question. If all the slots between two friends' cars are occupied, between two friends के cars के बीच में, 2 friend के जो cars हैं, तो the 7 cars, उनके बीच के सारे slots filled हैं. ठीक है. What is the minimum number of cars parked in the parking lot? Yeah. So that being said, अगर हम पहला केस उठाते हैं, if we take case 1, then they're saying that last car, first car यहाँ पे U है, last car यहाँ पे V है, इन दोनों के बीच के सारी cars filled हैं. Yes. Occupied, 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 occupied. All of these are occupied. कोई भी slot जो है वो empty नहीं है. Same is the case in the second case also, है ना. तो अब हमें ढूंढना है कि minimum number of cars कितनी हो सकती हैं, which is -15 से लेके +16. दूसरे केस में अगर देखेंगे 15 से लेके -16. So at the end of the day, the numbers still are the same. Like I said, how do you count the cars in between? You do -1. यहाँ पे आप डायरेक्टली बस इन्हें ऐड कर लो. So what do you see? 16 minus of -15. यहाँ पे क्या हो रहा है? You're counting the 0 as well. Yes, and you're counting the other cars as well. So 16 minus of -15 is what? 16 plus 15, जो कि आ रहा है 31. And you also have to include one of the ends. तो यहाँ पे आप -15 जो कर रहे हैं तो इसे भी आपको काउंट करना है. So you add 1 to it, okay? और simply just count. 16 से चालू किया. What do you see? यहाँ पे
0 से लेके 16 तक वी हैव 17 कार्स, यहां पे 0 काउंट कर लिया हमने, ठीक है। सो 0 से लेके 16 तक वी हैव 16 प्लस 1 कार्स एंड -1 से -15 15 कार्स, सो 17 प्लस 15 यू हैव 32। ये क्यों काम नहीं किया? बिकॉज व्हेन यू सब्ट्रैक्ट वन विद द अदर, आप इसका वैल्यू भी इससे निकाल रहे हैं, राइट? सो यू ऑलवेज ऐड 1 टू इट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो इफ यू मेक अ मिस्टेक विद दिस, देयर इज समथिंग वेटिंग फॉर यू टू, आपका मार्क कम करने के लिए, नेगेटिव स्कोरिंग बढ़ाने के लिए। सो सी, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, दिस इज अ ट्रैप। एंड इफ यू मिस जज इट एंड आप +1 के बदले -1 कर दो, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन वेटिंग है। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आंसर इज ऑप्शन सी, 32। सो ईदर डू दिस डिफरेंस बिटवीन 2 and +1, और व्हाट डू यू डू? सिंपली जस्ट काउंट, है ना? 0 से लेके 16 तक, 1 से लेके 16 कार्ड्स है, -1 से -15 15 कार्ड्स हैं, और एक 0 पे एक कार है। दैट इज हाउ दिस वर्क्स, ठीक है। वी विल राइट दिस अगेन टू एक्सप्लेन इट टू यू। 0 से लेके 0 को जाने दो, 1 से लेके 16 वी हैव 16 कार्ड्स, -1 से लेके -15 तक वी हैव 15 कार्ड्स, एंड देन एक 0 पे एक कार है। सो टोटल we have 32 cars. This is the minimum possible. This is also the maximum possible. Ultimately, this is the only answer for. जब भी when you come across minimum, maximum, they'll tend to confuse you. Same thing नीचे भी देख लो, एक ही logic होगा. 1 to -16 there are 16 cars. 0 पे एक कार, 1 से लेके +15 तक there are 15 cars. यहाँ पे we are going to skip this part. यहाँ पे कोई कार नहीं है, हम assume करेंगे. सेम वे यहां पे कोई कार नहीं है, हम अस्यूम करेंगे, बिकॉज दे आर आस्किंग ओनली बिटवीन 2 फ्रेंड के कार्स, यू एंड वी। मेक सेंस? बढ़िया। सो विद दिस वी हैव आंसर ऑप्शन ए 32। प्लीज चेक व्हाट वेंट रॉन्ग, अगर आपने गलत किया। अगर आपने सही किया तो ऑफ द 3 डिफरेंट वेज ऑफ काउंटिंग, एक मैनुअल काउंटिंग, 4 डिफरेंट वेज ऑफ काउंटिंग, फिगर आउट विच इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू, ठीक है। दिस बीइंग सेड, लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड वन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड बिटवीन U and S? U और S के बीच के मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स। यहां पे अगेन when they say maximum, that basically means we have to consider the fact कि इन दोनों कार्स के बीच के जो भी empty slots हैं वो भी filled है। So U and S के बीच में जो भी कार्स हैं, जो भी slots हैं, वो सारे occupied हैं। Only then we'll get the maximum. वरना हम क्या कंसिडर करेंगे कि -14, -13, -12 ये सारे empty हैं. So if they are empty, it becomes more convenient for us to get the minimum number of cards. But क्योंकि यहाँ पे maximum पूछा है, we have to consider that they are full. Yeah. So again, what do you do? 1 से लेके 9 तक. Please be very careful. Between बोला है, between बोला है, not ऑल द कार्स काउंटिंग। तो प्रीवियस केस में सब काउंट करना है, यहां पे बिटवीन बोला है। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। सो व्हाट डू यू सी? बिटवीन यू एंड एस, राइट? सो यहां से यहां तक हमें काउंट करना है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। या सो -1 से -14 देर आर 14 कार्स, 0 पे एक कार, एंड 1 से लेके 8 तक 8 कार्स। बढ़िया। दिस मेक्स इट सो इजी फॉर अस टू डू द कैलकुलेशन बिट। सो वी हैव 15 + 8 23 कार्स मैक्सिमम। यहीं पे अगर मिनिमम पूछते, इफ दे हैड आस्क्ड फॉर मिनिमम, देन व्हाट इज द असम्पशन दैट यू विल डू कि जो भी एम्प्टी स्लॉट्स है वो सारे एम्प्टी है। जो भी स्लॉट्स यहां पे दिख रहे हैं, विद एक्सेप्ट फॉर द कार्ड्स दैट वी हैव प्लेस्ड, ये सारे एम्प्टी है। तो अगर ऐसे करते तो यू और एस के बीच में वीड हैव ओनली 3 कार्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। डन। सो विद दिस वी हैव 23 एज द आंसर। प्लीज क्विकली चेक where you went wrong. This question, if you don't understand the question, you can actually mess this up. यहां पे क्या पूछा है? If all the slots from one end of the parking lot are numbered starting from 1. सारे जो भी slots हैं, अब हमें नहीं पता, -16 और 16 हमने randomly लगाया है, right? This could go on. ये चलता रह सकता है till infinity. ये भी चलता रह सकता है till infinity. 16 and -16 हमने किया for the 7 cars के placement के लिए. Otherwise this could go on, right? So what they're saying is, अगर जो भी स्टार्टिंग है, जो भी 1 है स्टार्टिंग है, वो अगर नंबर 1 है और ये बोल रहे हैं कि
एंड द पुंटो इज पार्क्ड इन द स्लॉट नंबर 30। तो अब हमें क्या पता है कि पुंटो का जो भी जगह है दिस हैज टू बी 30। यस, जो हमने 0 कंसिडर किया था वो क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। या सो इफ पुंटो इज पार्क्ड एट 30 देन व्हाट हैपेंस इज द क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, अब आगे बढ़ते हैं। देन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्लॉट नंबर्स, ये सारे स्लॉट नंबर्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर स्लॉट नंबर्स। इसमें से कितने, कौन से नहीं पूछे हैं, क्या पूछे हैं, हाउ मेनी, कितने स्लॉट नंबर्स आर डेफिनेटली नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑफ द 7 फ्रेंड्स के कार। सो 7 फ्रेंड को छोड़ के अगर कोई भी एम्प्टी स्लॉट हमें दिख रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उल्टा करेंगे। व्हाट विल रादर डू इज फिगर आउट कौन से स्लॉट में कार्स है, 7 फ्रेंड्स की जो कार्स हैं वो कहां पर हैं। तो अगर ये 30 पे है, इफ 0 इज 30 दैट मीन्स वी आर एडिंग 30, 0 प्लस व्हाट गिव्स यू 30 है ना, सो यू एडिंग 30 टू इट। सो ये क्या हो जाएगा, स्लॉट नंबर 37। सी 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 पे टियागो खड़ी हो सकती है, दोनों में से कोई भी एक केस। सिंस दे आर आस्किंग डेफिनेटली नॉट पार्क्ड, वी हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ इट, है ना। एंड 39 पे श्लाविया खड़ी है, 41 पे 30 प्लस 11, 41 पे क्वालिस खड़ी है, 43 पे रिट्स खड़ी है, 45 पे यूरुस खड़ी है, 46 पे वेंटो खड़ी है। सेम वे यहाँ पे यू हैव टू डू -30, राइट, जो भी है उससे सब्ट्रैक्ट करना है। सो 30 - 7 इज 23। हाउ डू यू चेक, मैनुअली काउंट कर लो, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मेक सेंस, या सेम वे 30 - 9 is 21, 30 - 11 is 19, 30 - 13 is 17, 30 - 15 is 15 and 30 - 16 is 14। So all the slots जहाँ पे अपने साथ दोस्तों की जो कार्स खड़ी है वो है, वो कौन से हैं, 14, 15, 17, 19, 21, 23। सेम वे यहाँ पे 37, 39, 41, 43, 45, 46। ठीक है, बढ़िया। दिस बीइंग सेड, अब आंसर चॉइसेस को देखते हैं, कहाँ पे कार्स हैं, कहाँ पे नहीं है। 45 पे अपनी कोई कार खड़ी है, 45 पे अपनी कार खड़ी है, हो सकती है, मतलब डेफिनेटली एम्प्टी तो नहीं है। अगर सेकेंड वाला केस ट्रू हुआ तो वो एम्प्टी नहीं होगा। सो दिस इज समथिंग दैट वी डोंट वांट, नहीं चाहिए भाई, क्योंकि 45 फुल हो सकती है। सेम अप्लाइज फॉर 14 है, 14 पे कोई गाड़ी खड़ी है, स्लॉट नंबर 14 ये रहा, अपने 30 के हिसाब से स्लॉट नंबर 14 ये रहा, यहां पे एक वेंटो खड़ी है, नहीं चाहिए। व्हाट अबाउट 40 पे कोई कार खड़ी है, डेफिनेटली नॉट, ये दोनों केसेस में एम्प्टी है, ये यहां पर भी एम्प्टी है, यहां पर भी एम्प्टी है, राइट। सो अगर दोनों केसेस में एम्प्टी है, दिस इज व्हाट वी वांट। तो एक कार का, एक स्लॉट का हमें पता चल गया कि पक्का खाली है। लुक एट 15 खाली है, जी नहीं। लुक एट 28 खाली है, 28 यस, 23 और 30 के बीच में सारे कार्स के स्लॉट खाली है। सो फार हमारे पास 2 आ गए, व्हाट अबाउट 38 जी हाँ, 37 फुल है, 39 फुल है, 38 भी एम्प्टी है। सो हाउ मेनी डू यू सी एम्प्टी, डेफिनेटली एम्प्टी, दोनों केसेस को मिला के 40, 28 एंड 38। द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 3। डन। ये टीटा क्वेश्चन है, टीटा क्वेश्चन में हमेशा यू कम अक्रॉस विथ न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस, आंसर हैज टू बी 3। डन। इनमें से 3 ऐसे स्लॉट नंबर्स हैं जो पक्का खाली होंगे। कूल। Let's move on to the last question, आखिरी क्वेश्चन, बहुत इजी। If Vento is the first car in the parking lot, which of the following is the last one? अब whether you go from this direction or this direction doesn't really matter, कोई भी एक सिचुएशन में हमें क्या चाहिए, Vento पहली कार चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस साइड से अगर आप आ रहे हो तो Vento हमारी पहली कार है, इस साइड से अगर आप आ रहे हो तो Vento हमारी पहली कार है ना, क्योंकि पार्किंग का एंट्रेंस कौन सा है, वो सब एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दिया, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहे हैं कि आखिरी कार कौन सी होगी। अगर ये वेंटो, ये वाली वेंटो यहाँ पे सेकेंड केस में अगर ये पहली कार है तो लास्ट कार हमारी कौन सी होगी, यूरुस होगी, क्योंकि यहाँ पे कैनॉट बी डिटर्मिन नहीं है, वरना आप बोल सकते हो कि हमें क्या पता सर यहाँ पे कौन सी कार आएगी, हमें क्या पता यहाँ पे कौन सी कार आएगी, यहाँ पे कौन सी कार आएगी। 16 + 15 32 ही स्लॉट्स हैं, किसे पता, राइट, वो तो नहीं दिया।
सो यहाँ पे कोई भी हो सकती है, बट सिंस आंसर चॉइस में, सो यू ऑलवेज हैव टू अडेप्ट टू द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड है तो वो होगा हमारी आंसर. क्यों? क्योंकि हमने इन्हें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि फ्रेंड की कार में सबसे लास्ट कौन सी होगी, कौन सी लास्ट कार होगी, इन जनरल पूछा है. तो अगर कोई आंसर चॉइस होता कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड तो वो सही होता, क्योंकि टेक्निकली 15 के बाद बहुत सारे स्लॉट्स होंगे, किसे पता, राइट. सेम वे यहां पे अगर ये वेंटो स्टार्टिंग पे है तो यहां पे -15 पे यूरस है, बट वी डोंट नो कि क्या वहीं पे खत्म हो रहा है, -16, -30, -infinity तक ये जा सकता है, राइट. सो फ्रॉम हियर व्हाट डू यू सी, दोनों केसेस में the only part of the answer choice that exists here is option C, Urus. This has to be our answer. So always remember, adapt to the question, है ना, adapt to the question, adapt to the answer choices. Question भी नहीं है यहाँ पे, आंसर चॉइसेस के हिसाब से अपना गेम प्ले जो है, अपना क्वेश्चन को देखने का अप्रोच जो है वो उसे चेंज करना पड़ेगा. डन. सो विद दिस वी हैव 4 क्वेश्चन जिनके आंसर हमने कर दिए हैं. प्लीज अपने इसमें से चेक कर लेना. इसका आंसर 3 है, इसका आंसर 23 है और इसका आंसर 32 है. विद दिस वी आर डन विद द स्लॉट, विद दिस पर्टिकुलर राउंड 1 ऑफ चैलेंजर सीरीज. वी विल बी कमिंग अक्रॉस मोर सच सेट्स, और ऐसे सेट डालेंगे जहां पे यू हैव टू कंप्लीट द चैलेंज एंड देन वॉच द वीडियो सोल्यूशन. डन. With this, I hope this particular video helps you. और अगर आपने Challenger Round 1 complete कर लिया है, congratulations. Be super proud of yourselves. Do not forget to check this video solution for a better clarity on what to do and what not to do. And be ready for the second round. Same applies for guys who were not able to do the challenge. Don't worry about it. Still be super proud of yourselves. कम अक्रॉस वॉच दिस एंटायर वीडियो, फिगर आउट कि कहां पे आपने गलती करी है, कौन सी गलती करी है. डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स एंड पुट इन योर 100% इन द नेक्स्ट राउंड. आई होप दिस हेल्प्स यू. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. चीयर्स.